Hello, welcome to the class. So, friends, I have taken some question from CSIR NET examination from general aptitude part here. So, above class I mentioned, the earlier class I mentioned that the question source will be different sources than puzzling, pie chart, bar diagram, or sets, then relative velocity. So, here I have taken one question from the puzzling. So puzzling in general aptitude, basically it means that you have to logic, so you have to put the logic. It may not be the correct explanation, I mean may not be the correct mathematics. So if I say, see, just like this mathematics, so if I say 5 plus 1 is equal to 7, if I say this is not correct, okay, if I say 5 plus 1 equal to 7 and 6 plus 1 is equal to suppose 8, then 7 plus 1 is equal to suppose 9, then what will be the 10 plus 1, like this. But this mathematics is not the correct mathematics, okay, but I am giving a way how to I mean giving a logic. So from these three calculation you can find out the logic. It means इसका मतलब क्या है कि 5 प्लस 1 इक्वल टू बेसिकली 6, अगेन 6 के साथ 1 प्लस करेंगे तो 7 हो जाएगा, 6 प्लस 1 बेसिकली 7, 7 के साथ और एक्स्ट्रा करेंगे तो 8 हो जाएगा. इसी तरीके से 7 प्लस 1 इक्वल टू 8, 8 के साथ और 1 करेंगे तो 9 हो जाएगा. 10 प्लस 1 इक्वल टू 11 और 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा. सो दिस इज द answer in general aptitude part. Three portions, so 2 parts will be given, and from that portion you have to find out the basically the logic. अगर logic पता चल गया, then the rest calculation I hope you will be able to do. So this is one example. So various type of examples are there. If you take this is one example. This काम ये भी एक CSIR नेट एग्जामिनेशन CSIR में आया था. Okay, now here it is given that 3 calculation. From this 3 calculation you have to find out the logic, and वो जो logic है वो तुरंत आपके माइंड में आना पड़ेगा कि ये क्या लॉजिक लगा सकता हो कि ये 17 है या 15 है या 8 है, क्या लॉजिक हो सकता है, ये 13, 12 एंड 5 क्या लॉजिक हो सकता है, ये और ये क्या लॉजिक हो सकता है. वही तो यहाँ पर लिखना है, वही लॉजिक यहाँ पर यूज करके यहाँ पर लिखना है. सो यू सी, सो इफ आई पुट द लॉजिक हियर, तो लॉजिक क्या बन जाएगा यहाँ पे. So here I can write down the logic. So you see it will be satisfying. How? And if I say 17 and 15, is it 17 and 15? If I say 17 square multiply minus 15 square, तो क्या हो जाएगा. So a square minus b square, 17 plus 15 and your 17 minus 15 and that is equal to ये कितना हो जाएगा 32 multiplied by 2 is equal to 64, and this 64 is nothing, what I can write 8 square. You got my point? Again 13 square minus 12 square, what I can write 13 plus 12 and 13 minus 12, तो ये क्या बन जाएगा your 25 multiplied by 1 and that is 25, that is equal to 5 square. You see, तो ये आ गया, मतलब इसका स्क्वायर, इसका जो स्क्वायर इस कॉम्बिनेशन में ये लिखा है, ये 8 स्क्वायर. ओके, और इसी से हम क्या निकाल सकते हैं 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर को निकाल सकते हैं. और सिमिलरली देखिए ये होगा कि नहीं, तो 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर, सो 25 प्लस 24, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. सो 25 माइनस 24, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 49, ये 49 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 7 स्क्वायर, 7 स्क्वायर बन जाएगा. तो इसका इसी तरीके से आप करेंगे. सो इट विल बी योर 41 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर, इट विल बी 41 प्लस 40 एंड 41 माइनस 40 and that will be your 81. This will be 81 multiplied by 1 that is equal to 9 square. मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा
ये 9 हो जाएगा यहाँ पे, सो 9, सो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरीके से एक क्वेश्चन में लॉजिक अलग अलग लॉजिक होता है, यू कैन फाइंड इन वन क्वेश्चन यू कैन फाइंड यू कैन apply different logic here, this logic is sufficient here to get the correct option. So in this way, so you have to find out from 3 calculation, you have to find out the at least the logic which is fitted in this calculation and apply that logic in the rest calculation, you will get the correct option. तो ये होता है I mean logical question, reasoning question. So let us take some other example from the other sources. Acha, this is one question. The chemistry people will, I mean, very easily they will solve. मतलब उन लोगों को कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, आसानी से कर पाएंगे. लेकिन we can also, the questions are fitted in such a way that everybody can solve those questions. This is one question. The question is given, see, the molar fraction of hydrochloric acid in an extreme dilute aqueous solution is doubled. The hydrochloric acid में the molar fraction it is doubled कर दिया. The pH value of the resultant solution, what it will be. So whether it will be, the options are the approximately doubled, the approximately half, और the increase or decrease क्या होगा. Now basically यहाँ पे the question क्या है कि pH के बारे में कह रहा है कि pH क्या देते हैं, then what is the pH actually. So all of you know then in higher secondary और अभी जो भी है chemistry में अगर higher secondary में पढ़ा हुआ है, that pH is nothing but the negative logarithm of H positive ion, is not it. pH is nothing but the negative logarithm of H positive ion. And then similarly POH is negative logarithm of OH ion. ठीक है, यहाँ पे क्या किया कि जो according to the question, so क्या किया कि the hydrochloric acid में क्या कर दिया, इस आयन को डबल कर दिया, यह H पॉजिटिव आयन को क्या कर दिया, डबल कर दिया. You got my point. अगर मैं डबल कर देता हूँ तो क्या होगा, then what will be the pH, क्या होगा. नाउ जो pH अगर मैं इसको डबल कर दूं, जो pH होगा, pH अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड में अगर मोलर फ्रैक्शन अगर उसमें अगर आप चेंज करेंगे, pH में चेंज आएगा, ऑब्वियसली आएगा, एंड दैट pH विल नॉट बी इक्वल टू द earlier pH, so that will be the difference. So I say that is pH dash, the new pH जो होगा वो हमें निकालना है. एंड द कंडीशन क्या है कि इसको डबल कर दिया, माइनस लॉग ऑफ 2H पॉजिटिव डबल कर दिया. ठीक है, इस फ्रैक्शन को डबल कर दिया. यू गॉट माय पॉइंट. नाउ अगर इसमें डबल कर देंगे तो क्या होगा, ये लॉग है निगेटिव, अगर ये लॉग बेसिकली लॉग a इंटू बी माने मीन्स लॉग a प्लस लॉग b, तो क्या होगा, माइनस लॉग ऑफ 2 प्लस लॉग ऑफ h प्लस, so minus log of 2 minus log of h plus. Now you see this term minus log of 2, can I write plus here? Yes, this will be the minus log of h, and that is again क्या है, ये pH है, and this is minus log of 2 minus pH, I mean plus pH. You got my point. This is the initial pH and the new pH क्या क्या है, इस initial pH से कुछ टर्म, ये जो log 2 का जो वैल्यू होगा 2.310, तो जो ये वैल्यू होगा ये माइनस हो रहा है, इज नॉट इट. सो अल्टीमेटली क्या करेंगे कि जो इनिशियल pH था, अगर कंसेंट्रेशन अब बढ़ा देंगे तो pH घट रहा है, बट व्हाट अमाउंट इज इट. अच्छा ये तो डबल तो होगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं, बट अप्रोक्सीमेटली हाफ हुआ है क्या, नहीं हुआ है ना. तो ये जो लॉग कुछ वैल्यू रिड्यूस हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ये इंक्रीज भी नहीं होगा बट डिक्रीज हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है. तो वो क्या रिड्यूस हो रहा है, वो हाफ नहीं हो रहा है, दैट इज व्हाई दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट. So in this way, this is, I mean, chemistry people, I mean, they are well familiar.
So but physics or in mathematics or life science people also can solve this question, but simply this idea, the what is pH, the formula of pH. This is one question. So I will take another question from relative, relative velocity. Got my point? So relative velocity. So let us see that question. So this is one question. This is also came in CSIR NET examination. The question given कि a bird flies in the three sides of a field. एक field है. So then the shape of the field is an equilateral triangle, and the bird flies with the speed 2 km per hour, 4 km per hour, and 8 km per hour respectively. What will be the average speed of the bird? इसका मतलब क्या है कि the bird is flying like this and this in a equilateral triangle, okay, and you have to find out the average speed of the bird and the shape of the field, which is the bird is flying, that is equilateral triangle, okay. So that just like if this is an equilateral triangle, so all the sides will be same, but it is not given that what will be the distance traveled by the bird in one side. That is not given. So let us take x is the in one side x kilometer is the distance, and so since equilateral, this will be the x kilometer, this will be the x kilometer, is not it? So that all in three distance are same. If I can find out that in this distance, so what will be the time taken in this distance, what will be the time taken in this distance, what will be the time taken, then क्या होगा कि time taken in all the sides we can find out. वेलोसिटी तो गिवन ही है, अगर वेलोसिटी गिवन है, हमारा एवरेज स्पीड निकालना है, ठीक है. सो एवरेज स्पीड क्या होगा? लेट अस टेक दैट इस साइड में, एंड दीज आर रेस्पेक्टिवली. अगर इसमें वेलोसिटी में 2 ले लूं, इसमें क्या लेना पड़ेगा? इसमें 4 लेना पड़ेगा, इसमें 8, बिकॉज दीज आर द सक्सेसिवली 2 4 जो भी ले लो वो हो जाएगा. नाउ सी व्हाट विल बी टोटल डिस्टेंस. एवरेज स्पीड का मतलब क्या है? एवरेज स्पीड का मतलब है दैट टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. डिस्टेंस, वेलोसिटी क्या, स्पीड क्या है? स्पीड मींस डिस्टेंस बाय टाइम. अगर एवरेज लेंगे तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ओके. So what will be the total distance traveled by the bird here? So x kilometer. So 3x kilometer is the total distance. What will be the total time? What will be the time in this? Time in this? All will be different. Why? Because यहाँ पे velocity 2 km per hour, यहाँ पे 4 km per hour, यहाँ पे 8 km per. What will be the time taken at this position? We know that s is equal to क्या है? v into t. तो टाइम क्या होगा? टाइम इज इक्वल टू एस बाई वी. सो वेयर एस इज द डिस्टेंस, वी इज द वेलोसिटी. यहाँ पे से यहाँ से डिस्टेंस कितना है? एक्स. और व्हाट विल बी द वेलोसिटी? सो एक्स बाई 2. सिमिलरली यहाँ पे टाइम कितना होगा? डिस्टेंस है एक्स, तो वेलोसिटी 4. सो यहाँ पे क्या होगा? डिस्टेंस बाय एक्स, वेलोसिटी 8. सो यहाँ पे क्या? x by 2. So x by 2 is the time taken here, x by 4 is the time taken here, x by 4 is the time taken here. What will be the total time? So total time कितना होगा? So this time. So यहाँ पे total time होगा अगर x by 2 plus x by 4 plus x by 8 is the total time. And what will the total distance क्या है? ये 3 किलोमीटर है. So 3x किलोमीटर है. And that is that is your कितना given है? So this is the average velocity. So average speed. So average total distance by total time. So you can calculate here कितना हो जाएगा ये? अगर ये 3x then इसको करेंगे तो LCM will be your so this अगर आप कैलकुलेट करेंगे, this will be LCM will be your 8 and your 7x. So then x cancel. So क्या हो जाएगा? 3 into 8 by 7.
So here 24/7. So this is the correct option. So here this is the correct option. So in this way, one can solve. So let us take another question. Okay, this is another question. It was also CSIR NET examination. Sorry. So the given that which one of the following graph represents the function f(x) equal to sin x into cos x. So this is also sin x, this is also sin x graph, this is cos x graph, this is also sin x graph. So which will be the correct option? Now see, यहाँ पे given क्या है कि f(x) is equal to sin x into cos x. So if I say here only given, all the options are given either sin x, single sin x, or either cos x, but the domains are different. The maximum values are here 0.5, here maximum it will be 1. Okay, so but the function is given two functions, so cos x and sin x. So but यहाँ पे क्या है option either sin x or either cos x. So we have to convert this function so in a single sinusoidal function or cosine, sin x or cosine x. So कैसे कर सकते हैं? So we know a formula that 2 sin x cos x is equal to sin 2x. I can write here. So if I say f(x) is equal to sin x and cos x, and if I write sin 2x here, that means I am writing 2 sin x cos x. So 2 I am writing extra, so I have to divide by 2. So half of 2 sin twice x. Now what will be the maximum value of sin twice x? The curve, now see from here we can say that ये तो cos तो कभी नहीं होगा, cos हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे sin आ गया है. So ये ऑप्शन नहीं होगा. Now this 3 are sin function. So ये क्या होगा? Now what will be the what will be the maximum value of sin x? Sin x का maximum value क्या है? Sin x का maximum value है +1 से -1 से +1 तक. -1 less than equal to x less than equal to this. ठीक है, अगर तो ये होता है. तो सिमिलरली sin 2x का वैल्यू क्या होगा? सो -1 से +1 तक होगा. अगर मैं यहाँ पे इन दिस सेक्शन अगर मैं हाफ मल्टीप्लाई कर दूँ, ये -½ होगा और ये लेस देन इक्वल टू हाफ ऑफ sin 2x होगा और लेस देन इक्वल टू +½ होगा. तो यही फंक्शन, यही हमारा f(x) हो गया. सो -½ लेस देन इक्वल टू f(x) हो गया लेस देन इक्वल टू +½ मतलब क्या आ गया? जो फंक्शन हमारा यही पे बन गया हाफ ऑफ 2 sin twice x, that is the maximum limit, it will be -½ means -0.5 less than equal to f(x) less than equal to 0.5. so maximum value कहाँ से होगा? -5 to -0.5 to +0.5 तक. सो एक साइन होगा लेकिन उसका देखिए माइनस मैक्सिमम वैल्यू -0.5 टू प्लस, ये मैक्सिमम कितना 1 आ गया, तो ये नहीं होगा. ये देखिए ये भी 1 तक आ गया, तो ये नहीं होगा. बट हियर द मैक्सिमम वैल्यू इज पॉजिटिव 0.5 to -0.5. so this will be the correct option. So in this way from graph also you can have one question. I'm again repeating that in CSIR NET examination or GATE examination you can have one question from puzzle, one question from the sitting arrangement, one question from the relation between the persons, one question from the logic, one question from the graph, one question from the pie chart, one question from the bar diagram, so one question from the Venn diagram. So any general aptitude book, you choose any general aptitude books and you just try to solve a 5 problem from each section. I hope that will be the sufficient for CSIR NET examination general aptitude part. And so ये that is not possible, all the questions are not possible to discuss here, but just use any book you can check, you can take any book and just those point the sources of question I mentioned here, just you take some question from the sources, that will be enough for
getting at least out of 30 at least 20 marks, 20 to 25 marks easily आ जाएगा. तो इस तरीके से आप करेंगे CSIR जनरल एप्टीट्यूड पार्ट एंड बी कॉन्फिडेंट दैट ये जो पार्ट है ये आफ्टर मतलब आफ्टर सॉल्विंग द पार्ट सी एंड पार्ट बी देन यू कम टू पार्ट ए, because if you try to focus on part A first you can score but you can solve but your score increasing, the rate of score will be the less because it carries only 2 marks or 1 marks gate examination में और CSR में 2 marks, but in part C and part B those questions carries more marks. Another important बात मैं यहाँ पे कहने वाला हूँ कि see, if you see one question is not solving by you within 5 minutes, so don't give more than 5 minutes in one question. If you are very confident that okay, another you have crossed 5 minutes, another 2 minutes are required and you are very confident that the solution will come, so then you can extend another 2-3 minutes, but within 5 minutes if the solution you are not getting any solution, so skip the question, move to the next question because the time is limited. So don't give too much time in one question, rather you try to solve the other question. Okay, so this will, I think you got some idea from the general aptitude part कैसे करना है. So I wish you all the best and hope ये आपको आपके लिए थोड़ा हेल्प हुआ है. So thank you.